हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स के साथ डिस्कस करूंगा, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1. It is required to produce a small scale map of an area in magnetic zone by directly plotting and checking the work in the field itself. Which one of the following surveys will be most appropriate for this purpose? This question has been asked in ESE 1995. So we'll discuss all the options one by one. The first option given is chain surveying. So chain surveying is a method of surveying in which we do only the linear measurement and no angular measurements are taken, and ये यूज़फुल रहता है स्मॉल ग्राउंड्स के लिए विद फ्लैट टेरेन्स एंड विद सिंपल डिटेल्स। और इसको परफॉर्म करने के लिए हमें एक चेन और टेप का रिक्वायरमेंट होता है with few ranging rods. So in this, the complete area is divided into a framework of triangles, and with the help of all three sides of triangle, other measurements are taken, and for locating the details हम लोग ऑफसेट्स का यूज़ करते हैं। ऑफसेट्स, टाई लाइन्स, चेक लाइन्स, these are used for locating the details in the ground. For example, in this we will first of all we will establish the baseline AC. After that we will establish this B and D station, and with the help of these survey lines. After that, with the help of tie lines which are perpendicular to the baseline, all the other details, suppose here is a plot, इस एरिया में अगर कोई खाली प्लॉट है, ठीक है, तो उसकी डिटेल को लोकेट करने के लिए we will use these offsets. The next option given is theodolite. In theodolite surveying, we measure the horizontal and vertical angles, और उनकी हेल्प से हम सभी distances, whether it is horizontal or vertical, हम उन सभी distances को measure करते हैं। जैसे कि इस फिगर में दिया हुआ है कि अगर हम किसी स्टेशन पर अपने ट्राइपॉड को लोकेट कर दें एंड वी नीड टू फाइंड आउट द वर्टिकल एंगल ऑफ दिस टेरेन फीचर, सो हम अपने थियोडोलाइट को एक पॉइंट पर सेट करने के बाद उस टेरेन फीचर को लोकेट करेंगे, एंड द एंगल दैट इज सबटेंडेड बाय दिस थियोडोलाइट will be the vertical angle, and the distance between the ground station and the terrain feature is measured with the help of trigonometric principles. Similarly, if there are other feature on the ground, then the horizontal angle between these two feature will also be calculated with the help of theodolite. Then next one is plane table surveying. So it is a very quick method of surveying where field observations and plotting of the plan proceed simultaneously. इसमें हम एक plane table establish करते हैं ground में, and we take all the readings and measurements on the ground itself. So it is very fast, and it can be even be used in magnetically sensitive areas.
बट द प्रॉब्लम विद दिस टाइप ऑफ सर्वे कि ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं रहता है, क्योंकि all the measurements are taken, and if there is any error on ground, then it will come up in your field sheet. Also, when it is raining and in the scorching heat, it is not possible to carry out this type of survey in the field. Then last option is compass surveying. Compass surveying में हम angular measurements लेते हैं of the survey lines, and the linear measurement are done with the help of chains, and it is used to plot traverse of which, या फिर इसको यूज़ करते हुए हम बाकी डिटेल्स ग्राउंड के फीचर्स की लोकेट कर सकते हैं. सो नाउ एज पर द क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे कि हमें एक स्मॉल स्केल मैप प्रिपेयर करना है इन द मैग्नेटिक जोन बाय डायरेक्टली प्लॉटिंग एंड चेकिंग द वर्क इन द फील्ड इटसेल्फ. सो ऑफ ऑल द ऑप्शंस द मोस्ट appropriate option would be the plane table surveying. So the answer for first question will be option C. Next question. So second question. A 30-meter metric chain is found to be 0.1 meter too short throughout the measurement. If the distance measured is recorded as 300 meter, then the actual distance measured will be. So in this question हमको एक 30 मीटर की मेट्रिक चेन दी हुई है जो 0.1 मीटर टू शॉर्ट है, एंड द डिस्टेंस जो हमने रिकॉर्ड की है दैट इज़ 300 मीटर. तो पूछा गया है क्वेश्चन में व्हाट वुड बी द एक्चुअल डिस्टेंस. सो इन दीज केसेस वेयर द चेन लेंथ इज़ इनकरेक्ट, क्या होता है कि जब हम चेन कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं ओवर रफ एरियाज, चेन आइदर बिकम टू लॉन्ग और टू शॉर्ट. सो अगर चेन टू लॉन्ग होगा देन द मेजर डिस्टेंस विल बी लेस, एंड अगर टू शॉर्ट होगा तो इट विल बी मोर. सो इन दीज केसेस द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन would be equal to L dash upon L into measured length of line, where L dash is the faulty length of the chain and L is the true length of the chain. So as in the question, the faulty length was given as 29.9 meter, while the true length of the chain was given as 30 meter. So the true length or actual length of line would be the faulty length of chain, that is 29.9 meter, divided by the true length of the chain, that is 30 meter, into the distance recorded or measured. Then this value comes out to be as 299 meter, which is the actual distance which was measured on ground using a chain of 29.9 meter length. So our correct option for second question would be option C. Next question. Offsets are, so as we discussed in this chain surveying in the first question, offsets जो होते हैं these are drawn either right or left to the chain line, ताकि हम जितने भी बिल्डिंग्स हैं या कलवर्ट्स, बाउंड्रीज, कुछ भी हमें फीचर लोकेट करना है ग्राउंड में, उसकी डिटेल्स को लोकेट करने के लिए वी यूज़ ऑफसेट्स. सो दीज कैन बी आइदर परपेंडिकुलर टू द चेन लाइन और एट एन एंगल अदर देन 90 डिग्री टू द चेन लाइन. सो इसके बेसिस पे हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, विच आर परपेंडिकुलर ऑफसेट्स एंड ऑब्लिक ऑफसेट्स. सो इन द क्वेश्चन 4 options are given. Lateral measurements made with respect to main survey lines, which seem to be correct. Perpendiculars erected from chain lines. Then option C is taken to avoid unnecessary walking between stations. So the taken to avoid unnecessary walking between stations, these are tie lines
and measurements which are not made at right angles to the chain line. This is not correct because there is one category of offset जिसको हमने पढ़ा था अभी, that is perpendicular offsets which are made at right angles to the chain line. So these two options are incorrect. Now out of these two, this is a part of offset, that is the perpendiculars erected from the chain lines. While in this question, in the first option, the best appropriate answer is given, that is lateral measurements made with respect to main survey lines. So in this option, both the types of offsets are covered. So most appropriate option would be option A. Moving on. Question number 1.4. Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. So the first value given in list 1 is correction for sag. So when any chain or tape is suspended between 2 points, then it assumes the shape of centenary. So the measured distance would be more. So to avoid this, we apply the correction for sag. And as we know, the most important line that is to be drawn in chain surveying, that is baseline. तो सबसे इम्पॉर्टेंट और जितने भी करेक्शंस होंगे सबसे पहले हम बेसलाइन में अप्लाई करेंगे. सो योर करेक्शन फॉर सैग, दैट इज वैल्यू A मैचेस विद वैल्यू 3 ऑफ लिस्ट 2. देन सेकेंड वन इज लीस्ट काउंट ऑफ 30 minutes. एज वी नो दैट लीस्ट काउंट ऑफ 30 minutes, दैट मीन्स कि ये वैल्यू किसी इंस्ट्रूमेंट के करस्पॉन्डिंग होगी. सो we will see it later. Then next option is overlap. So overlap is used in aerial photography. इसमें क्या होता है कि जब हम किसी भी ग्राउंड में नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल फीचर को किसी एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म पे कैमरा माउंट करके फोटोग्राफ्स की हेल्प से उसको लोकेट करते हैं, उन सभी फीचर्स को लोकेट करते हैं, then that type of surveying is known as photogrammetry. Or since the edges may not be clear, so हम उसको अवॉइड करने के लिए उस एरिया को, सर्टेन एजेस को दोबारा से अगली फोटोग्राफ में भी ओवरलैप कराते हैं, so that we get the clear picture. So there are two types of overlap, longitudinal overlap and side overlap. So the value of longitudinal overlap is 60%, while the side overlap is around 30%. So for now we know that aerial photograph, this overlap belongs to aerial photograph. So that means the C value will match up to second one. Then additive constant. In tachymeters we find out the horizontal distance between the tachymeter and the vertical staff, and this distance is given as D is equals to Ks plus C, where K, since it has been multiplied, therefore it is known as multiplying constant, which is given by F upon I, while this C is added, that's why it is known as additive constant, which is given by F plus D, where F is the focal length of objective lens, D is the distance between the objective lens and the trunnion axis, while I is the distance between the stadia diaphragms, upper and lower stadia diaphragms. So that means our additive constant will be used in tachymeters. So D would belong to 1. That means we are left with fourth value for the B. So that means the 30 minutes least count is for prismatic compass. That is a factual value that you need to remember. Therefore, the correct order would be 3, 4, 2, 1, which is option B. Next, question number 5. The number of observations required of an operation to produce results having a specified accuracy.
So for this we know a statistical formula, इसमें हम probable error of single observation को find out करते हैं. Since the value is given as E is equals to plus minus 0.6745 under root square summation of V square divided by n minus 1. So that means if we write this or we simplify this, then n would be equals to some constant value into summation of V square upon E square plus 1. So that means this n varies inversely with your E square. Since E is the probable error which is allowed, so that means that is our confidence interval. So the number of observation required, जिससे कि हमें एक specified accuracy मिल सकती है, that varies inversely with the square of the confidence interval. So the option A would be correct. Then next, question number 6. Following steps are necessary to obtain sufficient accuracy with the tape. तो हम जब चेन सर्विंग करेंगे and we are doing linear measurement using tape, तो हमें accuracy maintain करनी है. So for that हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उन दो पॉइंट्स को लोकेट करेंगे जिनके बीच में हमें लीनियर मेजरमेंट करना है. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चेन को स्ट्रेट रखेंगे ऑन दोज 2 पॉइंट्स विच आर टू बी मेजर्ड, जिनके बीच की लीनियर डिस्टेंस हमको मेजर करनी है. सो द फर्स्ट स्टेप वुड बी कीपिंग द टेप ऑन द लाइन बीइंग मेजर्ड. देन अब हमें इस दोनों पॉइंट्स के बीच में किसी भी प्रकार का सैग इंट्रोड्यूस नहीं करने देना है. सो टू अवॉइड वी वुड अप्लाई इनफ और यूनिफॉर्म टेंशन ऑन द टेप फॉर ईच मेजरमेंट. So that means the second step would be first one. So till now the option would be 4-1. So that means our option would be C. But looking at other options, then breaking the tape on slopes are necessary to keep the tape level. So what is this term breaking the tape? We'll see. जहाँ पर हम कभी भी स्लोपिंग ग्राउंड में होंगे, सबसे पहला प्रिंसिपल जो चेन सर्विंग में टेप को यूज़ करते समय होता है, दैट इज़ वी नीड टू कीप द टेप लेवल. सो हम किसी भी दो पॉइंट में टेप को लेवल प्लेटफॉर्म में रखते हैं. बट जहाँ पर हमारा स्लोप बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा स्टीप होगा, ऑन दोज लोकेशंस हम टेप को फुल लेंथ में हॉरिजॉन्टल नहीं रख सकते. सो टू अवॉइड दिस व्हाट वी डू, वी मेजर अ सर्टेन डिस्टेंस कीपिंग द टेप लेवल, देन वी ब्रेक, देन अगेन एंड देन वी ब्रेक, then again. So this process is continued जब तक कि हम पूरी डिस्टेंस को मेजर नहीं कर पाते हैं. Then the complete distance is accumulated to total a full tape length, and this procedure is called as breaking the tape. So that would be our option. Third step, that is 2. Then keeping the accurate count of stations, that would be our last option because it is not of much importance with respect to all these 3 points. So that means the last step would be the step number 3. So the correct option would be C. Moving on. So question number 7. The true length of a line is known to be 200 meter. When this is measured with a 20 meter tape, the length is 200.80 meter. The correct length of 20 meter tape is. तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ट्रू लेंथ गिवन है, दैट इज 200 मीटर, एंड द ट्रू लेंथ ऑफ द टेप इज 20 मीटर. द इनकरेक्ट डिस्टेंस measured is 200.80 meter, and we need to find out the faulty length of the tape. तो हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन is equal to true length, that faulty length of tape divided by true length of tape into the incorrect distance measured, or the distance, simply the distance measured. So actual distance given is 200 meter,
faulty length is to be calculated. The true length of the tape is 20 meter and the distance measured is 200.8 meter. So from here L dash comes out to be 19.92 meters. So that means the correct option for this question would be option A. Then moving on, next question, it is a similar question. A line of true length 500 meter when measured by a 20 meter tape is reported to be of 502 meter. The correct length of the tape. फिर से हमें ट्रू लेंथ दी हुई है लाइन की, इनकरेक्ट लेंथ दी हुई है लाइन की, एंड द करेक्ट length of the tape is given. So that means the actual length of line, that is 500 meter, that is equal to faulty length of tape divided by actual length of tape, that is 20 meter, into the incorrect distance measured, that is 502 meter. So from here L dash again comes out to be 19.92 meter. So that means our option for this question, correct option for this question would be option A. Moving on, next question number 9. Here again two lists are given and we need to find out the correct pair. So there are different corrections given for the chain surveying. So first of all we will study these different types of corrections. सबसे पहले हमें सैग करेक्शन दिया हुआ है. सो जब कभी भी हम अपने टेप को सस्पेंड करते हैं बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ड्यूरिंग द चेन सर्वे, देन इट एज्यूम्स द शेप ऑफ अ सेंटेनरी. इस तरह का शेप ये एज्यूम कर लेता है. सो दैट मीन्स द एक्चुअल लेंथ जो हमें मेजर करनी थी दैट वाज दिस मच, बट द डिस्टेंस मेजर्ड इज ग्रेटर. सो दैट मीन्स वी नीड टू subtract the value corresponding to sag correction, which is given by W square L cube divided by 24P square, where W is the weight per unit length, L is the measured length of the chain or this between 2 points, and P is the pull applied during measurement. So the next correction is pull correction. जब हम कभी भी चेन सर्वे करते हैं, then when we are placing our chain between 2 points, then uniform tension is applied between on these 2 points. But अगर हमने जो pull apply किया है that is more than the standard pull जिस पर हमने टेप को standardize किया था या फिर कम है, then the distance measured or the chain length would differ. So the correction for this is equal to CP is equals to P minus P naught into L over AE, जहाँ पर P naught is our standard pull, P is the pull applied during measurement, A is the area of cross section of tape, and E is the modulus of elasticity of the tape, and L is measured length. अगर हमने टेंशन यहाँ पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया, ज़्यादा पुल अप्लाई किया, दैट मीन्स आवर चेन लेंथ विल इंक्रीज, और अगर हमने कम अप्लाई किया देन दैट वुड बी शॉर्टर. देन नेक्स्ट करेक्शन इज़ फॉर टेम्परेचर करेक्शन, जिसमें पता है कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा देन दिस टेप विल एक्सपैंड, एंड इफ टेम्परेचर इज़ नेगेटिव इज डिक्रीजिंग देन दिस इज lesser than the standard temperature, then our chain will contract. So this is given by Ct is equals to alpha into Tm minus T naught into L, where Tm is the mean temperature during measurement and T naught is the temperature of standardization. L is the measured length in meter and alpha is the coefficient of thermal expansion. Then last correction is reduction to mean sea level. जब कभी भी हम कोई भी लाइन मेजर करेंगे एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ हाइट h above mean sea level, तब that would be more as compared to the length measured on the mean sea level. जैसे कि अगर हम यहाँ पर mean sea level पर हैं then this much length is the length between these 2 points. But when we are measuring इन 2 points को अगर हम किसी अलग हाइट पर मेजर करेंगे,
and suppose at an height of h from mean sea level, तो ये लेंथ ज़्यादा निकल कर आएगी. तो इस डिस्टेंस को हमें रिड्यूस करने की ज़रूरत है. सो फॉर दैट वी अप्लाई अ करेक्शन विच इज़ नोन एज reduction to mean sea level correction, which is given by CR is equals to HL upon R, and this type of correction is always subtractive. So now matching all the options. So first one is L into 1 minus H upon R. So that is corresponding to mean sea level correction. So that means option A would match to mean sea level, that is 4. Then B, that is W square L upon 24P, that is our sag correction. So that means B would correspond to 1. Then C, that is plus minus alpha TF minus TS into L. So that is our temperature correction. That means C would belong to 3. Then D, T minus PS into L over AE, that is the pull correction. That means D would belong to 2. So correct order would be 4, 1, 3, 2. That is our option A. Then moving on to last question. So question number 10. Match list 1 with list 2 and select the correct answer. So हमें दो लिस्ट दी हुई हैं, जिसमें फर्स्ट लिस्ट में हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वेज आर गिवन एंड सेकेंड लिस्ट में उनके पर्पस दिए हुए हैं. सो फर्स्ट इज़ टोपोग्राफिकल सर्वे. सो इस सर्वे में क्या करते हैं हम, जितने भी हमारे ग्राउंड पर नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल फीचर्स हैं उनको लोकेट करते हैं ऑन ड्राइंग शीट. सो फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पर ये शीट देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारा कॉन्क्रीट ड्रेनेज चैनल दैट इज़ बीइंग शोन, प्लांटिंग्स आर शोन, देन बिल्डिंग्स आर शोन, देन द हाईवेज and other features are also shown. So therefore to determine or locate the feature of the area of the country, topographical surveys carry out किए जाते हैं. Then next is cadastral survey. ठीक है, these type of survey are conducted to establish boundaries. ठीक है, जितने भी हमारे artificial या फिर natural features होंगे उनकी boundaries for the legal purposes स्टैब्लिश करने के लिए हम कैडेस्ट्रल सर्वे यूज़ करते हैं, जिसको हम प्लॉटिंग भी कहते हैं. ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ सर्वे इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक लैंड सर्वे. ठीक है, सो ये दोनों शीट्स जो है हमारी, ये दोनों शीट्स एग्जांपल हैं कैडेस्ट्रल सर्वे का. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे. ठीक है, तो ये सर्वे कंडक्ट करते हैं टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स या फिर जितने भी हमारे रेलिक्स जो हमें डिस्कवर करते हैं. ठीक है, फॉर दोज टाइप्स ऑफ डिस्कवरीज. तो जिस टाइप का सर्वे हम कंडक्ट करते हैं दैट इज़ नोन एज आर्कियोलॉजिकल सर्वे. ठीक है, ये हमें आइडिया देता है अबाउट द पास्ट हिस्ट्री और कल्चर जो उस सिविलाइजेशन में जिस पास्ट में एग्जिस्ट किया करता था. ठीक है, देन लास्ट वन इज रिकनेसाइंस सर्वे. ठीक है, इस सर्वे में हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स जो होते हैं, ठीक है, एक ही रूट के लिए डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स जो हैं उनको स्टडी करते हैं. ठीक है, और उनमें से जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम है, फिजिबल है, जो इकोनॉमिकली एंड कंस्ट्रक्शन वाइज, उसको प्रिलिमिनरी सर्वे के लिए फाइनलाइज करते हैं. ठीक है, फिर उसकी फर्दर स्टडी करते हैं प्रिलिमिनरी सर्वे में. सो आवर ऑप्शन ए वुड मैच टू topographical survey would match to natural features of the country, that is 3. Then B, that would match to reconnaissance survey, that is to determine the possibility and rough cost of the surveying system to be adopted, that is 4. Then C, cadastral survey, to determine the boundaries of the fields, houses, etc. So that is C belongs to 1. Then D, that belongs to 2. So the correct order would be 3, 4, 1, 2. That is given by option A. So here we conclude our first video. ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो do like, share and comment on this video, और इस चैनल को, YouTube चैनल को
ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने बाकी दोस्तों को भी ये चैनल के बारे में शेयर करिए। एंड वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज़। जितने भी हम ES के सारे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर हैं, 1 by 1 वी विल डिस्कस